Prime Minister Modi's scathing attack at the Congress and the DMK. He once again hit out at the Congress and its India bloc ally DMK over abusing Sanatan Dharm. Raising questions, he went on to ask as to why the Grand Old Party is supporting those who abuse Sanatan Dharm and that Congress has lost its core identity. He went on to, in fact, further hit out at the DMK for trying to find new ways to insult Sanatan Dharm. Tamil Nadu Chief Minister has hit back, accusing the Prime Minister of misusing agencies, as well as fired PM is the only Vasool Raja tribe. Stalin has also taken to social media to hit out at the Prime Minister and said that it will be disadvantage for Tamil Nadu if BJP is voted to power. Meanwhile, Congress Chief Mallikarjun Kharge has gone on to say the Prime Minister was born to criticize and that he has never praised the Congress. कि जब देश चलाने की देशवासी जिम्मेवारी देते हैं तो आपका सिंगल माइंडेड फोकस होना चाहिए। देश के लोग दुर्भाग्य से पहले की राजनीतिक कल्चर ने परिवार को कैसे मजबूत बनाना, परिवार की जड़ों को कोई उखाड़ न दे, उसी में शक्ति लगाते रहे। डीएमके का तो जन्म शायद इस नफरत में पैदा हुआ होगा और धीरे धीरे वो नफरत का खेल भी उनका लोग स्वीकार करने नहीं लगे हैं और इसलिए वो नए नए तौर तरीके अपना करके बोल रहे। डीएमके के प्रति जबरदस्त गुस्सा पैदा हुआ है। मैं कल्पना नहीं कर सकता इतना बड़ा गुस्सा पैदा हुआ है। वो गुस्सा पैदा डाइवर्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ पॉजिटिव वे में। संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे और पहला संविधान बना। उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें। मजबूरी कांग्रेस की ये देश के लिए चिंता का विषय। ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய பிரதமர் மோடி மாதிரி ஈடி ஐடி சிபிஐ வச்சு மிரட்டி கட்சியை உடைக்கிறது, எம்எல்ஏ எம்பிக்களை வாங்குறது, முதலமைச்சர்களை கைது செய்கிறது, தொழில் முனைவோர்களை மிரட்டி தேர்தல் பத்திரம் வாங்குறது, பிஎம் கேர்ஸ்னு தனியா அறக்கட்டளை வச்சு நிதி வாங்குறதுன்னு வசூல் பண்ண ஒரே வசூல் ராஜா மோடி ஒருத்தர் தான். வாயை திறந்தால சாதி மதம்னு மக்களை பிளவுபடுத்தி தான் பேசுறாரு. காங்கிரசினுடைய தேர்தல் அறிக்கையை பார்த்து பொறுத்து கொள்ள முடியாம என்ன சொல்றாரு, முஸ்லீம் லீக்கினுடைய அறிக்கைன்னு விமர்சிச்சு பிரிவினைவாதம் பேசுறாரு. இப்ப இன்னும் கீழே இறங்கி போய் மற்றவங்க உண்ணும் உணவை விமர்சிக்கிறாரு. பதவியில தொடர முடியாதுன்றத வெளியில பிரிவினை பேச்சில இப்போ ஈடுபட்டு இருக்கிறார். உணவு என்பது தனி நபர்களுடைய விருப்பம். அடுத்த மனிதர் என்ன சாப்பிடுன்னு முடிவு செய்ய மோடிக்கு மட்டுமல்ல யாருக்குமே உரிமை கிடையாது. இப்படியெல்லாம் ஒரு பிரதமர் பேசுவாரா? வாக்குக்காக இப்படிப்பட்ட மலிவான அரசியல் பண்ற மனிதர் இந்திய வரலாறு இதுவரை பார்க்கல. அதனாலதான் சொன்னேன், பாஜக இந்த நாட்டுக்கு வில்லன். The Prime Minister and the central government have been vehemently opposing in the name of so-called other words in the development of Tamil Nadu, right? Any of the indices that you have taken, right from health to education to development. So whatever the Prime Minister and the central government are projecting right now is completely for the elections, is basically vote bank politics. I don't think that's going to work here in Tamil Nadu because this population and the people here have a very strong attachment to the Tamil identity and culture. The Prime Minister is speaking about the anger against DMK going to the BJP. Logically speaking, if there is any anger, if at all there is any anger, only the ADMK will be in a good position to reap it, not the BJP, certainly not in the state of Tamil Nadu. And
If you look at the statement of the Prime Minister, who will the people angry about? The party which has ruled the state only for 3 years and has delivered on good governance, or the party which has ruled the union government for the last 10 years and has not delivered on any of the promises they made? The Prime Minister is constantly criticizing Congress, claiming that DMK and Congress are corrupt. What do you have to say about that? He is born to criticize. When he has praised Congress, he never spared even Pandit Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi sometime, even all the Congress leaders, those who have sacrificed for Even this today he country. has spoken about Sanatana. That I don't want to speak in such.